अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बुक फिज़िक्स क्लास 10th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की सिंपल हार्मोनिक मोशन कि थ्योरेटिकल स्टडी करने के बाद अब जो हम स्टडी करेंगे इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ फर्स्ट प्रॉब्लम the time period of simple pendulum is 2s. What will be its length on earth? What will be length on moon? What will be length on moon if gm is equal to ge over 6, where ge is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि जो पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारी उसमें हमें फाइंड आउट करना है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2s. व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑन मून if gm is equal to ge over 6, where ge is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Next is solution. Given data, first of all write given data. T is equal to 2 seconds, ge is equal to 10 meter per second square, gm is equal to ge over 6, so it will be 10 over 6 is equal to 1.67 meter per second square. Next is find हमने करना है length of pendulum on earth and मून कि हमने LE एंड LM फाइंड आउट करना है. और जो ही हम LE और LM फाइंड आउट करेंगे तो जो टाइम पीरियड विल बी T विल बी इक्वल टू 2 पाई L ओवर G. कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G होगा. नेक्स्ट इज स्क्वेयरिंग and arranging the equation for length. कि स्क्वायर लेंगे हम इक्वेशन का जिससे हम इसको कहेंगे कि आया क्या इसका फॉर्मूला टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एंड एल ओवर जी, ताकि जो स्क्वायर रूट मौजूद था टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी रेडिकल मौजूद था, उस रेडिकल को एलिमिनेट करने के लिए यानी ख़त्म करने के लिए हम यहाँ स्क्वायर लेंगे. और स्क्वायर के बाद अगर हम वैल्यू को कि एल ई अर्थ ओवर फाइंड करेंगे जी ई टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर. कि जो ही हमने अर्थ का जो है पेंडुलम फाइंड आउट करनी है उसकी लेंथ, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो LE जी ई टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर. कि ये क्या है, ये फार्मूला है जो हमने यूज़ करना है. नेक्स्ट पुटिंग वैल्यूज़ की वैल्यू पुट करेंगे. जैसे जी ई की वैल्यू हमारे पास 10 थी, मल्टीप्लाइड 2 स्क्वायर 4, पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एल ई इज़ 1.02 मीटर. कि लेंथ ऑफ जो पेंडुलम होगी अर्थ की वो
1.02 मीटर होगी। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मून फॉर मून वी गेट LM इज इक्वल टू GM T स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर के दोनों जगह फार्मूले में जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ G की वैल्यू के लिहाज से आएगा कि आया जो G की वैल्यू है उस पर डिपेंड है कि जैसे अर्थ का फाइंड आउट करने के लिए हमने GE यूज़ किया, इसी तरह अगर हम जब उसका यूज़ हमने फाइंड आउट करना है मून का तो GM यूज़ करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ LM is equal to 1.67 multiplied by 2 raised to power square 4 पाई वैल्यू 3.14 स्क्वेयर कि जो GM की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो 1.67 फाइंड आउट की थी, और जो ही हमने साथ इसमें टाइम की वैल्यू पुट की कि वो 2 था, साथ उसका स्क्वायर लिया, इसी तरह 4 था, साथ 3.14 यानी पाई की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद LM विल बी इक्वल टू 0.17 मीटर कि जो लेंथ ऑफ मून है वो 0.17 मीटर है कि जो लेंथ ऑफ अर्थ थी वो 1 कि जो टाइम पीरियड था सिंपल पेंडुलम का वो 2 था। इसी तरह हमने लेंथ ऑफ जो अर्थ फाइंड आउट की है वो 1.02 मीटर एंड लेंथ ऑफ मून इज़ 0.17 मीटर। ये थी हमारी पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट 10.2 इज़ कि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 10.2 a pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut the period of pendulum is 4.9 second. What is the value? What is the value of G on the surface of moon? कि सेकंड जो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट द पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 4.9 seconds. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून? सॉल्यूशन गिवन डाटा कि जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले आपने गिवन डाटा लाजमी लिखना है। लेंथ L इज इक्वल टू 0.99 मीटर एंड पीरियड मीन्स टाइम इज 4.9 सेकेंड। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला of time period, according to formula of time period, T is equal to 2 pi L over G कि T is equal to 2 pi L over G। स्क्वेयरिंग एंड अरेंजिंग कि अब हम स्क्वेयर लेंगे ताकि इसका जो स्क्वेयर रूट मौजूद है वो एलिमिनेट हो सके। T स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर L ओवर G। और जब हमने वैल्यू ऑफ G फाइंड आउट करनी है कि वैल्यू ऑफ G क्या है, और जो ही हम वैल्यू ऑफ G फाइंड आउट करेंगे तो G की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे कि G विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर L ओवर T स्क्वेयर कि हम G के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जो ही हम G के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं
putting values g is equal to 4 multiplied by 3.14 square multiplied by 0.99 4.9 square. कि g will be equal to 4 multiplied by 3.14 square is equal to 9.88 multiplied by 0.99 4.9 square. g will be equal to 39.5 multiplied by 0.99 and square of 4.9 square is equal to 24.01. अब हम जो इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 0.042 एंड 39.5 जी, तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि g इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वैल्यू ऑफ g क्या है? वैल्यू ऑफ g है 1.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 1.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये उसकी वैल्यू है ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ मून. The value of g on the surface of moon is 1.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी वैल्यू है. ये थी हमारी न्यूमेरिकल नंबर 2. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 इज़ 10.3. numerical 10.3. find the time period of a simple pendulum of 1 meter length placed on Earth and on moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of its value on Earth. Value on Earth, where ge is 10 meter per second square. Third numerical is find the time period of a simple pendulum of 1 meter length placed on Earth and on moon. The value of g on the surface of moon is 1/6 of its value on Earth. Solution is given data L is equal to 1 m, g is equal to 10 meter per second square, gm is equal to ge/6, so 10/6 is equal to 1.67 meter per second square. According to time period of simple pendulum, according to the time period of simple pendulum, the formula is T is equal to 2 pi L over G. We can write time period on Earth as कि ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड था. अगर हम अर्थ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करें तो फिर हम लिख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी ई. तो फिर हम क्या ये वाला फॉर्मूला यूज़ आउट करेंगे. टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी ई.
Putting the values in this equation, putting values in this equation, TE is equal to 2 multiplied by 3.14 and 1 is equal to length and 10 is G value. T is equal to 2 multiplied by 3.14 multiplied by 0.316. T is equal to 1.985 second and 1.85 roundabout. T is equal to 2 seconds. The time period for simple pendulum of 1 meter length on earth is equal to time 2 seconds कि आया वो 2 seconds के बराबर है. Next time period on moon. Time period on moon. Tm is equal to 2 pi L over Gm. Putting values in this formula, putting values in this equation, putting values in this equation, Tm is equal to 2, 3.14, 1 over 1.67. Tm is equal to multiplied by 3.14 multiplied by 0.774. 0.774. Through multiplication, the answer is 4.9 seconds. 4.9 seconds. कि मून पे जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा फ्रॉम 1 मीटर लेंथ इज 4.9 सेकेंड. सो द आंसर इज द टाइम पीरियड फॉर अर्थ इज 2 seconds and for moon is 4.9 seconds. कि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे 2 सेकंड लगेंगे और मून पे 4.9 सेकंड्स के आया कितने सेकंड्स यहाँ मौजूद हैं. ये थी हमारी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल न्यूमेरिकल 10.3. नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.4. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculates its length when G is 10.0 meter per second square. Solution. Given data. Numerical 10.4. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length along when the value of G is 10 meter per second square. Time is 2 seconds. GE is equal to 10 meter per second square.
according to time period, t is equal to 2 pi L over G, squaring and arranging the equation. LEGE t square 4 pi square, 4 pi square. Putting the values, L is equal to 10 multiplied by 2 square 4 pi value square, and L is equal to 1.02 meter. कि length of the simple pendulum for earth will be 1.02 मीटर के, वो किसके बराबर होगी, वो 1.02 मीटर के बराबर होगी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज numerical 10.5. If 100 waves pass through a point of medium in 20 seconds, what is the frequency? What is the frequency and time period of wave? If wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. Numerical 10.5 is if 100 waves pass through a point of medium in 20 seconds, what is the frequency and time of the wave? If wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. Solution: given data, number of waves 100, time taken 20 seconds, frequency unknown, wavelength lambda 6 centimeter is equal to 0.6 meter, wave speed is equal to v is equal to unknown. According to formula of frequency, number of waves over time, putting values, f is equal to 100 over 20, f is equal to 5 hertz, f is equal to 5 hertz. कि जो 100 वेव्स पास आउट करेंगी, उन 100 वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5 हर्ट्ज. नेक्स्ट इज फॉर्मूला f t is equal to 1 and t is equal to 1 over f. So t is equal to 1 over 5, t will be equal to 0.2 second.
कि एक वेव को पास आउट करने के लिए 0.2 सेकेंड्स यूज़ हुए हैं। जब 0.2 सेकेंड्स यूज़ होंगे तो टोटल 100 वेव्स राउंड अबाउट 20 सेकेंड्स। फार्मूला फॉर वेव स्पीड, कि वेव की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी, पुटिंग वैल्यूज v is equal to 5 multiplied by 0.6, then v is equal to 0.3 मीटर पर सेकेंड, कि जो वेव की स्पीड होगी वो 0.3 मीटर पर सेकेंड होगी। कि जो 100 वेव्स पास आउट की हैं उन 100 वेव्स में से टाइम जो टेकन था वो 0.2 सेकेंड था। एक वेव का फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज थी और वेव स्पीड उसकी 0.3 मीटर पर सेकेंड थी। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 10.6। A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency 12 hertz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of wave? In numerical 10.6 is a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency 12 hertz. The resultant has a wavelength of 3 centimeter. What is the wave speed of the wave? Solution: given data, frequency f is 12 hertz, wavelength lambda is 3 centimeter, 0.3 meter, speed v is to be find out according to formula v is equal to f lambda, कि v किसके बराबर है f लैम्डा के। पुटिंग दी वैल्यूज v is equal to 12 multiplied by 0.03, v is equal to 0.3 मीटर पर सेकेंड। कि एक वुडन बार में जो वाइब्रेटिंग जो रिपल टैंक में प्रोड्यूस हो रही थी वो फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज के साथ उनकी जो वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर थी, तो वो जो वेव स्पीड वहाँ प्रोड्यूस हुई थी वो 0.36 मीटर पर सेकंड थी। क्या आया 3.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वहाँ वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 10.7. A transverse wave produced
on a spring has a frequency of 190 hertz and travels along the length of the spring of 90 meter in 0.5 seconds. Then to be find out is A, what is period of wave, B, what is speed of wave, C, what is the wavelength of wave. Numerical 10.7 is a transverse wave produced in a spring has a frequency of 190 hertz and travels along the length of the spring of 90 m in 1.0 f in 1.05 seconds. What is the period of the wave and what is the speed of the wave and what is the wavelength of the wave. कि हमने जो तीन चीज़ें यहाँ फाइंड आउट करनी है वो यही हैं कि हमने उसका वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, वेव का वेवलेंथ फाइंड आउट करने के बाद हमने उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड के साथ साथ हमने उसका टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन गिवन डाटा. Frequency f, (190 hertz), wavelength lambda is equal to 3 centimeter, 0.03 meter. Length of spring D is equal to 90 meter. Find out A, time find out करेंगे, B, speed, V, C, wave, लेंथ लैम्डा. कि ये है गिवन डाटा. हमने टाइम फाइंड आउट करना है, हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है और साथ ही वेव लेंथ फाइंड आउट करनी है लैम्डा. नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ft is equal to 1 and t is equal to 1 over f. Putting values, 1 over 190, t is equal to 0.01 सेकेंड. के टाइम पीरियड क्या उसको लगेगा 0.01 सेकेंड. नेक्स्ट इज according to formula d is equal to vt and v is equal to d over t. Putting values, v is equal to 90 over 0.5 and v is equal to 180 मीटर पर सेकेंड. कि वेव की स्पीड कितनी होगी 180 मीटर पर सेकेंड. कि जो ही हमने वेव स्पीड का जो फॉर्मूला था यूज़ करने के बाद हमने उसकी स्पीड ये निकाली. नेक्स्ट द थर्ड इज वेव लेंथ. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला
अकॉर्डिंग टू फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। कि लैम्डा किसके बराबर है, वो v ओवर एफ के बराबर है। पुटिंग वैल्यूज लैम्डा इज इक्वल टू 180 ओवर 190, लैम्डा इज इक्वल टू 0.95 मीटर। कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 0.95 मीटर। कि आया जो हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया वो 0.1 सेकेंड था। इसी तरह जो डिस्टेंस फाइंड आउट किया वो 180 मीटर पर सेकेंड था। नेक्स्ट लैम्डा इज इक्वल टू 0.95 मीटर। कि लैम्डा किसके बराबर है, 0.95 मीटर के बराबर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 10.8। water wave in a shallow dish are 6.0 centimeter long. At one point the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. What is the speed of water waves? Okay, what is the speed of water waves? B. What is the period of water waves? Water waves in a shallow dish. Numerical 10.8. Water waves in a shallow dish are 6.0 centimeter long. At one point the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. What is the speed of water? What is the period of water waves? Solution. Given data, length of waves lambda 6.0 centimeter, 0.06 meter, frequency 4.8 hertz. Find speed and time. According to formula, ft is equal to 1, t is equal to 1 over f। कि t किसके बराबर है, वो 1 over f के बराबर है। पुटिंग वैल्यूज t is equal to 1 over 4.8 then t is equal to 0.21 seconds। कि टाइम कितना उसको लगेगा, 0.21 सेकेंड्स। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ स्पीड फाइंड आउट करेंगे। स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। पुटिंग वैल्यूज v is equal to 4.8 multiplied by 0.06 and v is equal to 0.29 मीटर पर सेकेंड। कि जो टाइम पीरियड था वो 0.21 सेकेंड होगा और जो वेव स्पीड होगी वो 0.29 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट
Next numerical is 10.9. 10.9 numerical. At one end of a ripple tank, 80 centimeter across, a 5 Hz vibrator produces waves whose wavelength is 40 mm. Find the time the waves need to cross the tank. Numerical 10.9 is at one end of a ripple tank 80 centimeter across, a 5 Hz vibrator produces waves whose wavelength is 40 mm. Find the time of the waves need to across the tank. The time for the waves to cross the tank. Solution. Given data, length of tank D is equal to 80 centimeter, converted into meters 0.8 meter, frequency 5 Hz, lambda is equal to 40 mm and 0.4 m. Find time to cross the wave. Speed of wave कि आपने टाइम फाइंड आउट करना है और साथ ही स्पीड फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू फार्मूला. अकॉर्डिंग टू फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा कि v किसके बराबर है एफ लेमडा के. पुटिंग वैल्यूज v is equal to 5 multiplied by 0.04, v is equal to 0.2 मीटर पर सेकेंड. उसकी वेव की स्पीड कितनी होगी 0.2 मीटर सेकेंड. कि उस वेव की स्पीड को हम कहेंगे कि ये 0.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव आउट कर रही थी. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. क्या अब हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला d is equal to vt and t is equal to d over v. Putting values t is equal to 0.8 over 0.2 and time is 4 seconds. के आया इसको 4 सेकेंड्स लगेंगे मूव आउट करने के लिए कि इतना टाइम ये कंज्यूम करेगी एक वेव स्पीड 0.2 मीटर पर सेकेंड से टू क्रॉस द वेव के 4 सेकेंड्स लगेंगे इसको वेव को क्रॉस करते हुए. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल 10.10. न्यूमेरिकल 10.10 लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. What is the wavelength? What is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90 MHz, where 1m is equal to 10⁶ and speed of radio
wave is 3 multiplied by 10 raised to power meter per second. Numerical 10.10 is what is the wavelength of radio waves transmitted by an FM station at 90 MHz, where 1 m is equal to 10 raised to power 6. Speed of the wave is 3 multiplied by 10 raised to power 8 meter per second. Solution. Given data is frequency f is equal to 90 MHz. Speed of wave c is equal to 3 multiplied by 10 raised to power 8 meter per second. According to formula, c is equal to f lambda. For radio waves, we write c इंस्टेड ऑफ v कि रेडियो वेव्स के लिए हम v की जगह c लिखेंगे. पुटिंग वैल्यूज lambda is equal to 3 multiplied by 10 raised to power 8 over 90 multiplied by 10 raised to power 6. Lambda is equal to 3.33 मीटर. कि वेवलेंथ इसकी कितनी होगी 3.3 मीटर होगी. किस वेव की स्पीड से ये मूव करेगी, इसकी जो वेवलेंथ की होगी स्पीड वेवलेंथ होगी वो 3.33 m होगी. द आंसर इज 3.33 m. और ये था आपका लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 1, सिंपल हार्मोनिक मोशन के 10 न्यूमेरिकल्स. Next chapter is chapter number 2, sound. Numerical problems. Numerical number 1, 11.1. A normal conversation involves sound intensities of about 3.0 multiplied by 10 raised to power minus 6 watt per meter square. What is the decibel level for this intensity? What is the intensity of the sound for 100 decibels? Numerical 11.1. A normal conversation involves sound intensities of about 3.0 multiplied by 10 raised to power minus 6 W meter per square. What is the decibel level for this intensity, and what is the intensity of sound for 100 decibels? Solution. Given data, intensity I is equal to 3.0 multiplied by 10 raised to power minus 6 W minus square. Intensity level is equal to K log I over I naught B, 10 log I over I naught dB, whereas I naught is equal to minus 10 raised to power 10 raised to minus 12 W minus 2, and 1 bell is equal to 10 decibels.
कि एक बेल किसके बराबर है, वो 10 डेसिबल्स के बराबर है। इसी तरह हमने जो वैल्यू है 10 log आई नॉट 10 आई नॉट डी बी के आई नॉट डेसिबल्स। इसी तरह जो वैल्यूज़ हैं कि वो वैल्यूज़ किसके लिहाज से हैं, डेसिबल्स की वैल्यू के लिहाज से। नेक्स्ट इज पुटिंग वैल्यूज़ in equation 1 I is equal to 10 log I over I naught dB के पुटिंग वैल्यूज I is equal to 10 log 3.0 multiple 10 raised to power minus 6 10 raised to power minus 10 dB and I is equal to 10 log, divide both of the values, then answer is 3.0 multiple 10 raised to power 6 dB के 10 raised to power dB। log AB is equal to log A plus log B। intensity level 10 log 3 प्लस log 10 रेज़ टू पावर 6 कि log अगर ए बी हो तो हम क्या कहते हैं कि log ए बी किसके बराबर होता है, log ए प्लस log बी के बराबर होता है। इसलिए हमारे पास 3 मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर 6 मौजूद है। जब हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है तो हम इन दोनों का log कैसे लेंगे कि इंटेंसिटी लेवल 10 log 3 प्लस log 10 रेज़ टू पावर 6 decibels 6 decibels। next is 10 log 3 is equal to 0.8 and log plus 6 64.8 decibels के इंटेंसिटी लेवल I is equal to 64.8 डेसिबल्स के 64.8 डेसिबल्स के बराबर है। नेक्स्ट साउंड लेवल 100 डेसिबल्स, इंटेंसिटी 10 log I over I naught dB 100 decibels 100 decibels equal to 10 log I over 10 raised to power minus 12 dB। 10 is equal to log I over 10 raised to power minus 12 dB। next is taking anti-log by sides we get कि दोनों साइड से एंटी लॉग लेने की वजह से हम क्या लेंगे 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 और जो ही एंटी लॉग लेंगे I इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 10 माइनस 12 एंड I इज इक्वल टू 0.01 Wm माइनस 2 कि जो ही हम लेंगे लॉग तो इंटेंसिटी निकल आएगी 100 डेसिबल्स की। ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 11.2 इज न्यूमेरिकल 11.2 if a anarchally बाजार लाहौर the sound level is 80 decibel, what will be the intensity level of sound there।
11.2 is if Anarkali Bazaar Lahore, the sound level is 80 decibels, what will be the extensive level of sound there? Solution is given data. According to given data, sound level 80 decibels, intensity level 10 log I over I नॉट dB के log किसके बराबर है 10 log I over I नॉट dB. Putting values 80 dB 10 log I over 10 raised to 12 dB, then 8 is equal to log I over 10 raised to power minus 12. Next, taking anti-log 10 raised to power 8 I over 10 raised to power minus 12, and I is equal to 10 8 minus 12, I is equal to 10 raised to power minus 4 W के इंटेंसिटी क्या होगी इसकी 10 raised to power minus 4 W मीटर पर स्क्वायर की इसकी इंटेंसिटी इसके बराबर होगी. इंटेंसिटी पर हम कह सकते हैं कि जो अनारकली बाज़ार है वो जो लाहौर में सिचुएटेड है उसका जो साउंड लेवल है वो 80 डेसिबल्स पे कि जो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड वहाँ होगी 10 टू माइनस 4 होगी कि यहाँ उसकी जो इंटेंसिटी है वो 10 टू पावर माइनस 4 W मीटर पर स्क्वायर है. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 3. Numerical number 3, 11.3. At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 meter per second if the wavelength of a node is 5 centimeter. Calculate the frequency of the sound wave is this frequency lies in the audible range of human air. Numerical 11.3 is at a particular temperature the speed of sound in air is 330 meter per second if the wavelength of a note is 5 centimeter. Calculate the frequency of the sound wave. Is this frequency lies in the audible range of human ear?
solution. Given data, speed of sound v 330 meter per second, wavelength lambda 5 centimeter 0.05 meter. Find frequency. According to formula, f lambda is v. Okay, f lambda is equal to v. Putting values, f is equal to v over lambda, f is equal to 330 divided by 0.5 6.6, दोनों को डिवाइड करके आंसर है 6.6 मल्टीपल 10 रेज़्ड टू पावर 3 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी 6 मल्टीपल 10 रेज़्ड टू पावर 3 हर्ट्ज़. यस, दिस फ्रीक्वेंसी lies in the audible range of ह्यूमन एयर, कि ये ह्यूमन एयर की रेंज में रहती है. ये क्या है, ये ऑडिबल रेंज के उसकी रेंजेस 6.6 10 रेज़्ड पावर 3 और ये ऑडिबल रेंज है ऑफ ह्यूमन एयर के. जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड स्टडी की थी कि जो एक वेवलेंथ ऑफ नोट 5 सेंटीमीटर प्रोड्यूस करता है वो ऑडिबल ह्यूमन रेंज में ही प्रोड्यूस आउट होती है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 11.4. A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and period of heartbeats. Solution. Given data is number of counts n is equal to 72 time 1 minute 60 seconds. According to formula, f is equal to number of beats over time. Putting values, f is 72 over 60, f is 1.2 हर्ट्ज़. कितनी हर्ट्ज़ के वो फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज़ के साथ प्रोड्यूस होती हैं. एफ डी इज इक्वल टू 1 एंड टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ एंड टी इज इक्वल टू 1 ओवर 1.2 0.83 सेकेंड. के एक जो हार्ट बीट है, जो एक बीट वो है वो 0.83 सेकेंड्स में प्रोड्यूस होती हैं कि यानी उसको 1.5 मिनट लगता है प्रोड्यूस होने में. ये थे न्यूमेरिकल नंबर 4. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 11.5. A marine survey ship sends the sound wave straight to the sea bed. It receives
and echo 1.5 seconds later. The speed of sound in seawater is 1500 meter per second. Find the depth of sea at this position. Numerical 11.5 is a marine survey ship sends the sound waves straight to the seabed. It receives an echo 1.5 seconds later. The speed of sound in seawater is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. Solution. Given data, distance dm, time 1.5, speed of sight 1500 meter per second. According to formula, d इज इक्वल टू वी टी, कि d किसके बराबर है, वो v और t के बराबर है. d प्लस d इज इक्वल टू t 2d and 2d is equal to vt. Putting values कि 2d हमने यहाँ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि उसको जाने में भी डिस्टेंस लगा है और वापसी में भी उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कि यानी डिस्टेंस क्या है वो ट्वाइस में मौजूद हुए हैं, क्योंकि जो ही एक जो साउंड थी वो प्रोड्यूस करके वेव जो है वो ट्रांसफ़र की है टू दी बेड, और उसको शिप से बेड तक ऑफ द सी तक जाने के लिए जो डिस्टेंस लगा है वो 1d है, और वही डिस्टेंस जो उसको वापस आने में लगा है वो 2d है. इसलिए यहाँ हम d प्लस d 2d यूज़ करेंगे. 2d 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 2d इज 1125 मीटर, कि वो कितना डिस्टेंस होगा, वो 1125 मीटर होगा. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल 11.6. A student clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the clip from the student if the speed of sound v is taken as 346 meter per second. Okay, numerical 11.6 is a student clapped his hands near a cliff and heard an echo after 5 seconds. What is the difference between cliff from the student if the speed of sound v is taken as 346 meter per second? Solution. Given data,
distance d, time 5 seconds, speed of sound 346 meter per second. According to formula, d is equal to vt. So like here d is equal to 2d, कि दो डिस्टेंसेस मौजूद हैं. Then formula is 2d is equal to vt. 2d 346 multiplied by 5. 2d is 730. Then d is equal to 730 divided by 2 and d is equal to 865 मीटर. कि डिस्टेंस कितना जो ट्रैवल किया है एक साउंड ने, वो 865 मीटर ट्रैवल करेगी वो क्लिफ तक, यानी जहाँ जो है जहाँ से उसने क्लैपिंग की थी वहाँ से पहाड़ की चोटी तक उसने से दूर कितना, जितना एक एको प्रोड्यूस करने के लिए उसने 865 मीटर ट्रैवल किया है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 11.7. A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? 11.7 is a ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? Solution. First of all, given data, distance d, time is 3.42 second, 3.242 second, speed of sound in water 1531 meter per second. According to formula, d is equal to vt, d plus d is equal to 2d, 2d is equal to vt. Putting values, two d is equal to 1531 multiplied by 3.42, 2d is equal to 523,602 and d is equal to 261/8. कि जो ही हम 5236 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा कि डिस्टेंस कितना है 2618 मीटर कि आया इतना डिस्टेंस जो है वहाँ मौजूद है. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल 11.18. 11.8 numerical is 11.8.
the highest frequency sound humans can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of sound in air at this frequency at a temperature of 20 degrees Celsius? What is the wavelength of lower sounds we can hear of about 20 hertz? Assume at 20 degrees Celsius is 343 meter per second. Numerical 11.8 is the highest frequency sound humans can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of sound in air at this frequency at a temperature of 20 degrees Celsius? What is the wavelength of the lowest sounds we can hear of about 20 hertz? Assume the speed in air at 20 degrees Celsius in 343 meter per second. Solution: given data, highest frequency 20 hertz and lowest frequency 20 hertz. Speed of sound 343 meter per second. According to relation F lambda is equal to V. When frequency is high, wavelength will be low and the product will be equal with the same speed of sound. Fm lambda L is equal to V. Lambda L is equal to V over Fm. Putting values in this equation, okay, lambda L is equal to V over Fm. Putting values, we get lambda L 343 20,000, lambda L 0.017 is equal to 1.7 multiplied by 10 raised to power minus 3 लैम्डा एल. ये क्या है? लैम्डा एल की वैल्यू है. नेक्स्ट इज एफ एल लैम्डा एम इज इक्वल टू वी, देन लैम्डा एल इज इक्वल टू वी ओवर एफ एल. नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज दिस, putting values, lambda m is equal to 343 over 20 and lambda m is equal to 17.m. तो lambda m किसके बराबर है? lambda l is equal to 17.2m. कि ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो यूज़ होती हैं. और ये तो आपका न्यूमेरिकल नंबर 8. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 11.9
9. 11.9. A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? Number 11.9 is a sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? Solution: given data, frequency is 2 kilohertz, 20,000 hertz, lambda is 35 centimeter, 0.35 meter. Time to be find out. Distance d is 1.5 kilometer, 1500 meter. According to relation, f lambda is equal to v or d is equal to v over t. V is equal to f lambda, putting values. V is equal to f lambda, putting values. V frequency 2000, lambda 0.35, v is equal to 700 meter per second. Speed of wave is 700 meter per second. Next is time. D is equal to vt and t is equal to t over v. Putting values. T is equal to 1500 divided by 700. T is equal to 2.1 सेकेंड के टाइम किसके बराबर है 2.1 सेकेंड में जो स्पीड है वेव की वो 700 मीटर पर सेकेंड है। ये हैं आपके न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 2 साउंड फिजिक्स, चैप्टर नंबर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल नंबर 12.1 an object 10.0 centimeter in front of a convex mirror forms an image 5.0 centimeter behind the mirror. What is the focal length of mirror? 12.1 is an object 10 centimeter in front of a convex mirror forms an image 5.0 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? Solution: given data, object distance P 10.0 centimeter, image distance minus 5.0 centimeter. Because image is virtual behind the mirror, so it is taken as negative. Focal length F according to equation 1 over F 1 over P plus 1 over Q. Putting values in the equation. 1 over F is equal to 1 over 10 plus 1 over minus 5. Then 1 over F is equal to 1 over 10
minus 1 over 5, 1 over f, 1 over 2 and 10 through LCM. That's like 10 and 5, 5 2 and 5 1, 2 1 and 5 into 2 is equal to 10 कि LCM के थ्रू हमने क्या किया है, इसका निकाला है. तो फिर f इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर minus 1 over equal to 10 centimeter and it will be minus 10 centimeter. The focal length is negative due to convex mirror कि जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है. क्यों? ड्यू टू कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर की वजह से. नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल 12.2. An object 30.0 centimeter tall is located 10.5 centimeter from a concave mirror with focal length 16.0 centimeter. Is where image is located. A is where image is located. B, how high it is. Numerical 12.2 is an object 30 centimeter tall is located 10.5 centimeter from a concave mirror with a focal length 16.0 centimeter. Where image is located and how high it is. Find two things according to formulas. Solution: given data, object is height is 30 centimeter, object distance is 10.5 centimeter, focal length 16 centimeter. Q, find image height I according to mirror equation. One over f, 1 over p plus 1 over q. Arranging the equation for finding value of q. कि q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन अरेंज करें कि 1 over q, 1 over f minus 1 over p. Putting values, one over q is 1 over 16 minus 1 over 10.5. 1 over q is 10.5 minus 16 into 16 minus 10.5. q is minus 168 over 5.5. So q will be equal to minus 35.4 centimeter. The negative sign shows that the image is virtual and forms behind the mirror. कि ये एक virtual image है और virtual image के साथ साथ ये behind the mirror form होती है. Next is magnification. I over O is equal to Q over P. So I will be equal to Q over P multiplied by O. Putting values,
putting values I is equal to Q over P multiplied by O. I is equal to 30.54 multiplied by 10.5 multiplied by 30.0. I is equal to 87.26 centimeter. Height of the image is 87.26 centimeter. Next, numerical 12.3. An object and its image. An object and its image in a concave mirror are of the same height yet inverted when the object is 20.0 centimeter from mirror. What is the focal length of mirror? 12.3 is an object and its image in a concave mirror are of same height yet inverted when the object is 20.0 centimeter from the mirror. What is the focal length of the mirror? Solution. Given data, object height is equal to the height of image, object distance 20 centimeter, focal length equal magnification I over O is equal to Q over P. Then I is equal to O and Q over P is equal to 1. So Q over P is equal to 1 according to mirror equation. According to mirror equation, 1 over F is equal to 1 over P plus 1 over Q. 1 over F is equal to 1 over P plus 1 over Q. 1 over F is equal to 2 over P, and F is equal to 20 over 2 and F is equal to 10 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ किसके बराबर होगी? वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 12.4. Find the focal length of a mirror that forms an image 5.6 centimeter behind a mirror of an object placed at 35.4 centimeter in front of mirror. Numerical 12.4 is find the focal length of a mirror that forms an image 5.6 centimeter behind a mirror of an object placed at 34.4 centimeter in front of a mirror. Solution. Given data, P object difference is 34.4 centimeter, image distance is minus 5.0 centimeter, 5.66 centimeter. Find focal length F according to mirror equation. According to mirror equation,
1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q. 1 over f is equal to 1 over 34.4 plus 1 over minus 5.66. 1 over f is equal to 1 over 34.4 multiplied by 5.66. 5.66 minus 34.4. And next is 1 over f is equal to minus 28.74 and 194.7, and f is equal to minus 6.77. Focal length is minus 6.4 centimeter. The negative sign shows that it is convex mirror. कि नेगेटिव साइन क्या शो करता है, ये एक कन्वेक्स मिरर है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 12.5. an image of a statue appears to be 11 centimeter behind a convex mirror with focal length 13.5 centimeter. Find the distance from the statue of the mirror. 12.5 is an image of the statue appears to be 11.5 centimeter behind a convex mirror with a focal length 13.5 centimeter. Find the distance from the statue of the mirror. Solution. Given data, focal length minus 13.5 centimeter, image distance 11.5 centimeter, object distance to be find out. According to mirror equation, according to mirror equation 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q. For p value, 1 over p will be equal to 1 over f minus 1 over q. Then 1 over p, putting values, is equal to minus 13.5 minus 1 over 11.5. 1 over p is equal to minus 11.5 minus 13.5. 13.5 multiplied by 11.5. p will be equal to minus 155.25 over 25. The answer will be p is equal to minus 6.2 centimeter. कि जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वो माइनस 6.2 सेंटीमीटर होगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 12.6. An image is produced by a concave mirror of focal length 8.70 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall and at a
distance 19.3 centimeter from the mirror A. Find location and height of image. Find location and height of image. Find the height of image produced by mirror. Produced by mirror. 12.6 numerical is an image produced by a concave mirror of focal length 8.70 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall and at a distance 19.3 centimeter from the mirror. Find the location and height of the image. Find the height of the image produced by the mirror of the object is twice as far from the mirror. Solution. Given data, focal length f is equal to 8.70 centimeter, object is 13.2 centimeter and distance is 19.3 centimeter. Find image distance and height of image. According to mirror equation, 1 over f 1 over p plus 1 over q. 1 over q is equal to 1 over f minus 1 over p. Putting the values, q 1 over 8.7 minus 1 over 19.3. 1 over q is 19.3 minus 8.7 multiplied by 19.3. q is 167.91 or 10.6, which is equal to q is 15.84 centimeter. Okay, the distance from image is 15.84 centimeter. Magnification I over O, q over p. So to find I, q over p multiplied by O. Putting values, I will be equal to 15.84 divided by 19.3 multiplied by 13.2. 208.56 19.3 and I image distance will be height of image will be 10.8 सेंटीमीटर की हाइट क्या होगी उस इमेज की 10.8 सेंटीमीटर होगी. नेक्स्ट आई, if p is equal to 2p, if p is equal to 2p, I is equal to q over 2p multiplied by o. 1 over 2 q over p multiplied by o. Putting values, I dash 1 over 2 multiplied by 10 raised to power 10.8 is equal to 5.4 centimeter. I dash. This was your numerical number 12.6. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.